Actually, you can drop a couple of the users who are not on got their videos on, Okay. and get NPN. I would Okay. like him at the meeting, because Obviously, I'll do. you know, वो आप देख लेना, you know. So welcome everyone. It's absolutely wonderful to be with all of you again, and as we are entering, हम लोग एक नए phase enter कर रहे हैं business में, and this phase is going to be, believe me, it's going to be much, 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 much bigger than the first 26 years of the business. And मैं कई बार लाइफ में देखा हूँ, when you know when I made an error in judgment, you know about the future of a business or the future of a company, and then things just, I'll give you a simple example. COVID से पहले, we had a substantial stake in Reliance. I mean, काफी बड़ा exposure था, and so just COVID होते ही the share market crashed, and Reliance lost almost 50-60% valuation overnight. मेरे पैर ठंडे हो गए, एंड जिसमें जो मेरे को इन्वेस्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि द फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, शंकर, जस्ट रिलैक्स, इट विल कम बैक. And in just a couple of months after that, it bounced back. And within 3 months after that, the valuation doubled from the level in which I exited it. तो लाइफ में क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग कुछ भ्रम में आ जाते हैं. वी यू नो अच्छा, अरुण भाई, एनपी इज ट्राइंग टू कॉल मी. वुड यू जस्ट टॉक टू हिम प्लीज? Yeah, Pradeep. So, actually, you can also inform the team that, our normal जो YouTube link है for my meetings, that is the Bitly, either Kumar Anjali team or Shankar Sangeeta team. One of the two, you can go and get people into YouTube as well. Okay. So what I'm saying is that opportunities क्या होता है ना, opportunity का जो window होता है वो सभी लोग के लिए दिखता नहीं. Any opportunity, it doesn't, like when we joined the business in 1998, people like leaders जो जैसे डॉक्टर राम है ये कॉल में, अरुण भाई है ये कॉल में, thousands of people said no to the opportunity, and we believed it would work. हमारे बिलीफ के लिए कुछ रैशनल था क्या? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक वी हैड अ वेरी साउंड रैशनल फॉर आवर बिलीफ. व्हाट डू यू से डॉक्टर राम? यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. हमारा कोई रैशनल नहीं था हमारे बिलीफ के लिए. इवन आई मीन ऑल लीडर्स जो कॉल में है, Yeah, totally feel agree. free to unmute and participate in this conversation. I don't want this to be a monologue. In fact, at some stage, if you feel inspired to say something, feel free to interrupt me and chip in, because I want to make this a real live happening meeting. I am inspired like never before, guys. I'm telling you. And, you know, uh, partly because of my being acutely aware of what's happening in the environment, partly because of my incessant reading and content consumption. So I believe that, you know, regardless of what happens, we have an absolutely outstanding future. And you will see that future unfold. Shankar and Sangeeta are going to have a great future. And people who joined this bandwagon, many of you have believed in us, and we've delivered over the years. We've taken hundreds of people with us on the foreign trips in the ALSs in the past. And like life, what happens is life does have its ups and downs. And sometimes in our business, we tend to pretend and believe that we can't have any downfall in our business. That is, I think, a little becoming stretching it a little too far, because in life, if you have life, you will have ups and you'll have downs. And as an organization, हम लोग, how do we weather through these? And many of you have been extremely, extremely loyal to us and our family. And of course, we've been through very, very rough weather in the last 4 days. Sangeeta's dad was in the ICU, very sick. He's been exceptionally healthy, but for the last 2-3 months, he's been under the weather. Some of the people in this call are aware and actually involved with getting him back on his feet. We just got him back at 3 p.m. the afternoon today from the hospital, and he's doing very, very well with all your good wishes. And but we decided still, Arun Bhai suggested that we should do this meeting based on our calls. And he said, Shankar, you should let this inspiration that you have rub off on the team. So I'm not going to make anything very, very profound, but I'm going to just try and spend this meeting. So I've got some agenda drawn up. So
I'll quickly share that with you guys. So here's a quick agenda for the meeting. Drop one of a couple of the users who are not got their videos on, and get 10 p.m. I would like them at the meeting, But, yes, I'll do it. I think that is my YouTube playing. It's absolutely wonderful to be with all of you. Sorry, 1 minute, guys. I'll get into Sorry, that was actually YouTube playing back. बहुत सारा delay हो गया ना YouTube में. हाँ Okay. कौन सा लिंक है? The usual link, Arun bhai. The usual Shankar Sangeeta team or Kumar Anjali team, the Bitly link. You will find it in the meeting notifications. Okay, so this is the agenda for today's session. Rather than just walking through the agenda, what I would say is that first thing to succeed in any business, you have to have a powerful, non-negotiable dream that is worth achieving. It should be something that you really, really desire. Actually, desire sometimes causes unhappiness. But if desire causes unhappiness for a good, great positive outcome which is worth achieving, then I think that unhappiness is worthwhile. But a stage will come when you will have a powerful non-negotiable dream and आपका belief इतना strong हो जाएगा that you will achieve that dream that you will stop being unhappy. I very, very fondly remember जब हम लोगों ने business शुरू की थी, within a few months we knew we will succeed in this business. हमको कोई doubt नहीं था. And I would encourage all of you people to come to that state of feeling again. You have to get to that place where you believe that it's a done deal. Because अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, बिकॉज इस बिजनेस में ना आपको सफल होने के लिए यू नीड बोथ स्किल एंड स्किल भी चाहिए, स्केल भी चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय स्केल इज अ लार्ज बिजनेस वेयर यू आर सब्सटैंशियली डुप्लीकेटेड. करेक्ट. तो वो सब्सटैंशियली डुप्लीकेटेड बिजनेस करने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डुप्लीकेट इन दिस बिजनेस? Basically what will get duplicated is some of your work habits, skills जो है ना, skills बोलते हैं, right? So those skills get duplicated, your mindset gets duplicated, your attitude gets duplicated, your habits get duplicated, and so आपको ये business में सफल होने के लिए दोनों चाहिए. You need skill and scale. See, so the company would like us to become large retailers. But let us understand one thing, that if you want to make substantial income in this business, you need scale. Scale का मतलब क्या होता है? Like, the business that we have, it has substantial amount of width and a substantial amount of depth. क्यों चाहिए business में width and depth? So that you have stability, right? Depth will get you stability, width will get you profitability. तो आपको skill and scale चाहिए, and right? तो आपको skill and scale को बढ़ाने के लिए, so everybody agrees that आपको scale चाहिए. How do the scales come in? The scales will come in by using the system, by using the system. Scale will come in, right? And अगर आपके पास belief है ना, see, why people don't get results in the business today? Because उनका belief डगमगा गया है. And हम लोग देखेंगे कि अरे हमारा भी बिलीफ डगमगा गया है, हमको नहीं लगता है कि अभी सफल हो जाएगा बिजनेस में. If you're having that kind of a conversation, dialogue going on inside. Did this happen to some of our prospects in 1998? Yes. Did it happen to prospects in 1999? Yes. Does it happen to prospects today? Yes. But does it happen to everyone? No. Because we've seen thousands of people succeed in this business. आज ये meeting announced किया today afternoon. Kumar ji posted, a WhatsApp message with 5 new diamonds and up in the country, breaking out. So see, basically क्या होता है कि it is your responsibility to build up your belief and confidence. If you're going to say शंकर भाई ने मेरे अंदर belief डगमगा गया, that is not where it is. Shankar bhai can try. I mean, after all, I am human. Okay, let us assume I make a mistake. Is your dream so negotiable that अगर मेरा belief डगमगा जाए या अगर मेरे अंदर कुछ भी हो जाए, you're going to use that as an excuse, because these are so many people drop off in the business. Actually, हम लोग initially जब meetings में जाते थे, we used to see some leaders who had gone silver and gold in the first few months in the business. They used to speak from stage, right? And कुछ महीने के बाद वो लोग business से ही गायब हो गए. They just vanished from the business. But we went on to build one of the largest businesses in Western India.
So you आपको कभी कभी क्या होता है ना इस बिजनेस में, so you should watch and decide what to absorb. बट आपके अंदर यू शुड हैव अ नॉन नेगोशिएबल ड्रीम. तो आई वुड एनकरेज पीपल, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू गो बैक आफ्टर दिस मीटिंग इज टू सिट डाउन एंड रीराइट योर गोल्स. व्हाट इज दैट नॉन नेगोशिएबल ड्रीम, right? My dream is to set up an estate for my family. I've got two wonderful daughters. They're doing extremely well in music, right? And, in fact, Ragini has now drawn up concert plans to be abroad. In fact, she is going to spend 2, 3 months in North America next year on concerts. And then she is going to spend a substantial amount of time in the southern hemisphere in Australia and New Zealand. Similarly, the younger one is she and Mahesh are off to London for a concert tour towards the month end. So they're doing very well. And we built up a large business. We would like to create a fantastic estate for them, something that they can build upon, something that they can fall back upon. That is my non-negotiable dream. Of course, we have a lot of other dreams that we would want to accomplish in this lifetime. But they are small little toys and material dreams. But the larger vision is wealth. And I will talk about that in the second part of the session. The larger vision is wealth, and there is a huge difference between creating wealth and earning income. ये आप लोगों को समझना जरूरी है. And how critical this business is in realizing that wealth dream. Because when you create this business with scale, the organization that you create is in itself substantial amount of wealth, because it is wealth that will create cash flow, right? And it will wealth that will create large amounts of cash flow with which you can fund your lifestyle. तो बिलीफ को बढ़ाने का काम, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम, एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे. But at the end of the day, it is your responsibility to grow that belief and confidence on a day-to-day basis. हम लोग resources provide करेंगे, but आप देखेंगे ना इस business में, for example, first year, me and Dr. Ram, we went platinum. Arun Patak was around 12% that time, right? But come the second year in the business, they went platinum and above, and then within or a short period of time, they went emerald, stayed at emerald for a little while, went diamond, remained diamond, qualified for large number of years, and went ahead. हम लोग we did not reach it to that level, but अरुण भाई ने कभी नहीं बोला अरे शंकर भाई डायमंड नहीं गया तो मैं डायमंड कैसे जा सकता हूँ. And we always provided an environment where people could excel and grow based on their own potential. So belief grows in direct proportion to your commitment to your dream. अगर आपका ड्रीम वीक है, if you are not drawn out your dreams properly, आपका बिलीफ डगमगा जाएगा. क्यों? कल जो आप चाहते हैं आप रियली वो चाहते ही नहीं. So first sit down and find out what is it that you exactly want. What exactly do you want? If you haven't thought about it, you're not alone. Many people have not thought about it in the last few years. So if you got to take out your dream book, shake it up nicely, or get a new dream book, fill it up with lovely pictures, or make a beautiful catalog of your क्या बोलते हैं, whatever you want, and put it up, and find one primary real thing that touches you somewhere inside very deeply. मेरे को एक चीज याद था. I was in the wrong job when I got into the business, and there was very little I could do about it and try to change it, because it was the highest paying job in the country, and I was also at a very high level. So कोई potential employer नहीं था who could replace that job for me. So when the opportunity came into my life, you know, I saw it as a way to get free. And that became a complete non-negotiable dream. And we grew sorry, I wonder what's happening. We grew the maximum in this business in chasing that dream of me becoming free from a full-time job, right? And one thing which is very important, which I learned from that, is it is important for you to keep resetting that dream. Is it necessary to always have a dream? Probably not. If you built up a business like we did, and you created the income that we did, you probably would not go ahead, and probably that's what we chose to do for some time. But you don't have to do the same thing. If you think diamond or EDC or founders crown ambassador is your vision, go for it, guys. We will celebrate every one of your successes all the time.
right? And right now, I feel that that it is time for us also to move on, go ahead, so that we can continue to be the role model that many of you look us up to be for you in your life. Probably it would help in reinforcing your own belief that you can make it as big in this business, like we've already done, but we would seek diamond and beyond. That's for sure. So you must work to grow up your belief and confidence, and that is an inner deal. वो आपको अंदर से डेवलप करना होता है, एंड अरुण भाई, आप रिमाइंड करने से पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, राइट? तो तो अ, विश्वास जो है, बिलीफ को डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड बिलीफ कैसे डेवलप होगा? यूज द सिस्टम। The biggest way to create belief, which I learned recently, I always used to think that information created belief because I took action for granted. But belief बनाने का नंबर वन तरीका है is action that gets results, and that fuels belief. आपको बड़े बड़े बात सुना देंगे, आप बोले हाँ हाँ बहुत सारा पोटेंशियल है इस बिजनेस में, फिर आप काम करना शुरू करते हैं, फिर मंथ एंड में आपको कुछ दिखता नहीं है। How, I mean, so you got external environments which are pumping you up, but you're not matching it with the required action. And let me tell you one thing, guys. तो इसमें क्या होता है कि the system is what? System is input plus action. System is not just input. Input is what you get from outside. Action is what you give back to the business. अब समझ रहे हैं? You understand the difference? So when you start putting effort into the business, creating customers, sponsoring people, putting in regular action, उसका जब परिणाम आएगा ना, अब यू पुट इन रेगुलर एक्शन, आप हासिल करते जाओ, आप मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू करेंगे। एंड इवन इफ यू अचीव वन लेवल अबव व्हाट यू ऑलरेडी अचीव्ड इन द बिजनेस, your belief will hit a new level. When you start talking to people, people can feel the energy inside you. सो बिलीव को रेइंफोर्स करने का नंबर वन तरीका क्या है? ऑफकोर्स इनिशियली एक्सटर्नल मोटिवेशन है, देयर ऑल द नॉलेज दैट इज अवेलेबल, यू कैन एक्सेस ऑल द कंटेंट दैट इज अवेलेबल। भरपूर कंटेंट अवेलेबल है आजकल। इफ यू वांट मोटिवेशन, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नॉट अ सिंगल डे इन व्हिच आई डोंट गेट मोटिवेटेड आफ्टर माय बाइक राइड। व्हाई? Because I've got 4 or 5 headsets right now. I keep using them. I have noise cancelling headsets which cut out the external noise. I hear beautiful content when I drive the bike for 1.5 hours every day. Wonderful content. My mind is so fresh after listening to all that information on a day-to-day basis. तो external motivation के लिए बहुत सारे opportunities है, but that will not mean much until you start seeing results in your life. तो results को life में लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप agree करते हैं? How many of you agree to the fact that you know you are the architect of your life? अगर agree करते हैं आप? Absolutely, you are the architect. You are the creator, guys. Telling you. And you have not only this business, but you have unlimited opportunity to become successful today. And I feel that you can get multidimensional, right? Many of you are very accomplished professionals in this room. In this room, doctors हैं आप काफी सारे लोग. I want you to excel in that profession also. In fact, as doctors, you can become the strongest wellness professionals in the country and set up institutions as doctors, and then use whatever you have in this business to scale up your efforts. you know so so the system basically consists of the 4 basics, the 9 core steps, the 3 paths, and the 6 cardinal rules. और ये सब आप, if you system follow करने का मतलब क्या है? You're doing all the basics regularly, you're following the 9 core steps consistently, you're following the 3 paths reasonably, you're following the 6 cardinal rules to the T. And ये करने पर क्या होता है? You put in a lot of action. एंड वो एक्शन का क्वालिटी कैसे बढ़ता है? बेस्ड ऑन द इनपुट, बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। अगर माइंडसेट पॉजिटिव होता है, पीपल कैन सेंस इट व्हेन यू नॉट। आई टेल यू, व्हेन इन मोमेंट्स इन व्हिच आई हैव बीन डाउन, द फर्स्ट पीपल टू नोट इट आर पीपल इन माय टीम, राइट? एंड डू आई हैव कंट्रोल ऑन दैट? ऑफ कोर्स यस। व्हाट डू आई हैव टू चेंज? माय माइंडसेट, माय थिंकिंग। यस कार्तिक, गो अहेड It's कार्तिक। happening automatically, Shankar. I haven't done it. Some error in Zoom. I'll just lower it.
Don't worry about it. I mean, even if you want to chip in somewhere, as I told guys, अगर आपको inspired लगता है, आप कुछ बोलने के लिए मन कर रहा है, please unmute and interrupt me and talk, because I want you guys to walk away from this meeting with renewed enthusiasm. हिंदी ज्यादा रखना शंकर भाई, लोग। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मीटिंग के बाद आप रेन्यूड एंथुजियाज्म के साथ करें। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद दिला रहा हूँ। ज्यादातर तक जो आज बात करने वाला हूँ आप जानते ही हैं ये सब, सो अभी रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया किताब पढ़ा हूँ विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स ऑफ दिस सेंचुरी। इट इज अ बुक कॉल्ड द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। And of course, this guy is a corporate, and because I am from the corporate background, I am able to resonate a lot with this book. बट ये किताब एक एक लाइन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एज टू व्हाट इज पॉसिबल इन लाइफ। सो आई मीन, सो उसके उस किताब के कुछ नगेट्स के बारे में अगर टाइम वक्त अलाउ करता है मैं तो डिस्कस करूंगा। सो सो द एज फार एज स्केलिंग अप अ बिजनेस इज कंसर्न, अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है, आपको यू गॉट टू मेक अ फुल लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल whom you know to begin with, and then phone, social media, and through that. But air conditioning కూడా చూడుతున్నా రొంబ. Just put the fan off. Air conditioning is just saying. I'm getting very cold. It's just- and- Yeah. So basically, I'll quickly run through this because majority of you people are aware of this. But अगर आपने, if you have not sat down and made a list in a long time, I would encourage you to sit down with your contacts list. You would be very surprised कि होता क्या है आज के दिन में. Many people have not made a proper contacts list in a long time. And through social media, through your phone contact list, you can sit down and make a fresh list of names, and you'll be surprised you will find 100, 200 people you may have not talked to about the business. Or you automatically assume that they won't be interested. आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि people whom I contact, and if I have the slightest doubt on whether they'll adopt the business or not, I always have the option to make them a client for health and then give them exceptional service. So how will I scale my business in the future? I'll scale my business by providing exceptional service to my clients to help them overcome their health challenges. You know, उनका उनका जो भी इश्यूज है, मेटाबॉलिक इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने में मेरे पास एक प्रोग्राम है. I help people with that program. Many of you know that program. And if you don't know that program, you can contact your upline and he'll provide you the resources to, uh, to extend that. So you can contact people for either the opportunity or the products. By products, what I mean is a service, not just transactional sale of products, but providing your customer service to become healthy. And what do we use? We use a combination of diet, exercise, nutrition, mindset, emotional wellness, a combination of all these to basically help customers to become better. And then you provide such an exceptional service to them that some of those people transition to becoming your partners. Would it be worth contacting some people for the opportunity? Yes, based on आपके conversations कैसे हैं उनके साथ. Conversations के आधार पे you can decide whether you want to pitch the opportunity or the product. Let's keep it flexible. Because आपको एक चीज याद रखना है कि even if you get a large number of customers, you will create wealth in this business. You'll create the asset only when you have substantial amount of width and depth and your efforts are duplicated. तो आपको, if you want to focus on the opportunity or the products, that's completely left to you. एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कॉमन सेंस डील, कि आपको लोगों को प्रोडक्ट्स के लिए लाना है या अपॉर्चुनिटी के लिए लाना है बिजनेस में. सो यू नो सो द थर्ड स्टेप इज टू शो द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लान. एंड यहाँ पर भी आई विल डायल बैक टू व्हाट आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड. वेदर इट इज द प्रोडक्ट्स और द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द एंकर, बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस. If you've got strong belief and confidence, and you must work on these two aspects to make these four basics as effective. अगर आपके फोर बेसिक्स में इफेक्ट नहीं है इन आइदर मूविंग द प्रोडक्ट्स और इन गेटिंग पीपल और इवन क्रिएटिंग अ फॉलोइंग फॉर दैट मैटर, when will people follow you? People will follow you when they know, when they're sure that you can give their life direction, right? लोग आपको, you can come and chip in otherwise. Yeah.
You can add something. Actually, I'm already so pumped up and energetic. I can't wear my coat anymore. So I just got rid of it. And anyway, so basically, if you have belief, आपके पास अगर विश्वास है और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो यू वो आपके प्रोडक्ट्स के मतलब आपके जो सॉल्यूशन सेलिंग के स्किल्स हो या प्रोडक्ट सेलिंग के स्किल्स हो या अपॉर्चुनिटी पेश करने की जो बात है, उसमें यू विल बिकम वेरी वेरी इफेक्टिव. How come some people are going diamond in EDC today? The reason is very, very simple. That they are able to provide leadership to a community of people, consisting of customers and their team. अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इट इज अ लीडरशिप प्रॉब्लम. वो एक लीडरशिप इशू है. वो लीडरशिप इशू को कैसे करेक्ट करें, राइट? तो उसके लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. एंड ये सिर्फ ये बिजनेस नहीं है. आप कुछ भी शुरू करो, कल कोई भी काम शुरू करो, कोई भी काम शुरू करने पर, लीव अलोन सेटिंग अप अ लार्ज स्केल बिजनेस, अगर आप एक स्क्वाड्रन प्रोफेशनल भी बनना चाहते हैं, देयर ऑल्सो यू नीड बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे सिर्फ ये बिजनेस में बिलीफ और कॉन्फिडेंस की बात होती है. आप मुझे बताइए, राइट? वुड यू लाइक टू गो एंड buy from a shop which has no, whose owner doesn't have belief or confidence? Would you like to transact with anybody who doesn't have belief and confidence? Belief and confidence are essential to be socially relevant, right? तो बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए भी एक जरूरी है. सो इफ अगर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस मजबूत है, आई एम टेलिंग यू, वी ओ ऑल आर सक्सेस टू द बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दैट संगीता एंड आई हैड, तो ये याद रखना है कि अगर आपको 4 बेसिक्स को इफेक्टिव करना है. नाउ 4 बेसिक्स यू कैन यूज अगेन, लेट मी रिपीट, टू पिच फॉर कस्टमर्स or to create a team. But remember that eventually you cannot run away from the idea that you need a substantial number of people in your organization in width and depth, distributors, you know, who जो आपको who will determine, who will deliver a long term vision. मैं अभी जानना चाहता हूँ, how many people on this call would like to go platinum and beyond? Can you just raise your hands, please? Can I see a show of hands? आप डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं तो आप फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएंगे. Yeah. प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए. At least you know how many people are really engaged in the meeting. हाँ हाँ, करेक्ट. Okay. How many of you, ideally it should have been all 100 people on this call, but this is substantial. तो आपको एक चीज याद रखना है कि यू मस्ट टेक स्टेप्स. आपको स्टेप्स लेना जरूरी है टू इंप्रूव योर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है, no technical work. You won't be able to move the products. You will not be able to provide solutions. Now you will be able to create a following. And ये तो just remember that strong belief is essential for the 4 basics to work for you. आप strong belief रखकर business build करेंगे. And how do you create that belief? By being in the environment. Belief कैसे बनता है business में? Through the 9 core steps, right? What are the 9 core steps? पहला, आप सभी प्रोडक्ट्स यूज करिए, बिकम अ टेस्टिमोनियल. अगर आप जैसे कि आपको हेल्थ कोच बनना है, यू नो if you want to become somebody who's a health practitioner, or you want to reach a large community of people in health, you have to be in ideal health, you know and that's most critical. you know तो आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, एंड देन यू यूज एंटायर सिस्टम टू कंप्लीटली रीशेप योर लाइफ, रीमॉडल योर लाइफ कंप्लीटली. तो हो क्या होगा क्या कि यू नो आप खुद टेस्टिमोनियल बन जाएंगे. फिर हम दूसरे क्या करते हैं हम लोग, वी आर नॉट सेइंग सेल द प्रोडक्ट्स, यूज द प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स? सेलिंग प्रोडक्ट्स एक ट्रांजैक्शन होता है, राइट? लेन देन होता है सिर्फ. तो फिर लेन देन होने का टाइम में लोग कंपेयर करेंगे दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है या नहीं. लेकिन अगर लोगों को पता चलता है कि आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके इश्यूज के लिए, तो कस्टमर्स को अच्छी तरह से प्रोफाइल करो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. राहुल, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द स्लाइड्स. आई विल सेंड यू द स्लाइड्स, डोंट वरी, है ना?
तो अ, हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस देने के लिए, यूज द प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स। देखिए, आई हैव वर्डेड दिस वेरी केयरफुली so that you don't understand the difference between selling products and using the provide products to provide solutions to clients. The moment up you start using the products to provide solution to client is your number one priority. Client should get better. एंड आपका असर इतना अच्छा होना चाहिए उसके उनके ऊपर कि दे रियली स्टार्ट गेटिंग बेटर। मेनी ऑफ यू जो है पर्टिकुलरली डॉक्टर्स है ये टीम में, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन, Sangeeta and I have been treated by Chetan Shukla for many years, and by the very fact of him coming and seeing us and giving us medicines and telling us that everything will be fine with confidence, you know, that itself made a very big difference. I'm just sure. Or Dr. Ram Trey treating me and Sangeeta since the inception in 1998, or off late Dr. Muske taking care of all my cardiac related things, you know. Just the personal experience of meeting these people is a remedy. तो क्या आप वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को? इनफैक्ट कुछ देर के बाद आप लोग उनको क्लाइंट भी नहीं बोलेंगे, दे विल बिकम लाइक योर फैमिली मेंबर्स, जो आपके कस्टमर्स हैं। And you'll create such a tight bond with them that they are attached to you not just for the products that you give them, but for everything else that you provide for them to become better. The most important part is your persona, ki what assurance you bring about on the table. Whenever, like, we've been meeting doctors the last 3-4 days for Sangeeta's dad, and वो डॉक्टर्स का मिलने के टाइम में एक फीलिंग पास ऑन हो जाता है, which is much stronger than the drugs that he administers. You know, so this is critical. And the third part is showing the business plan. तो आपको products रोज यूज करना है. You have to get engaged with customers with the products daily. Just remember the word daily at the end of every one of the 9 core steps. And some things are not just daily, but all the time, right? So use the products daily. Provide solutions to clients with the products daily. एंड जो लोग बड़े बिजनेस होते हैं इस बिजनेस में, ईडी डेमरल डायमंड जाते हैं, बियॉन्ड जाते हैं, दे आर पीपल हु डोंट डू जस्ट दिस थिंग डेली, दे डू इट मेनी टाइम्स डेली. सो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट योर बिजनेस टू गो एनीवेयर अनलेस यू गेट टू डू दीज एक्टिविटीज डेली? तो अगर आप ये पहले 3 एक्टिविटीज डेली करेंगे, आप रेगुलरली करेंगे और अपने बिलीफ में काम करते जाएंगे, सो यू शुड ग्रो योर बिलीफ ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड यू शुड पुट ऑन योर एक्टिविटी ऑन अ डे टू डे बेसिस. दोनों करेंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि आपकी बिलीफ इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि डेली काम करने पे तो आपके पास रिजल्ट्स भी आ जाएंगे. और जब आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो जो हैबिट्स आपको रिजल्ट्स आने में हेल्प किया, वो हैबिट्स को आप और बढ़ाएंगे. अग्री करते हैं आप? यू अग्री गाइस? यू कैन ड्रॉप योर हैंड्स डाउन लाइक एवरीवन. सभी लोग आप अपना हैंड्स, डिजिटल हैंड्स ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब और पोस्ट यू कैन हेल्प मी ड्रॉप पीपल्स हैंड्स. तो फोर्थ, तो ये 3 एक्टिविटीज, पहले 3 एक्टिविटीज आर क्रिटिकल. यूजिंग द प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स डेली, and sharing the business plan or products to customers daily. This is something that you should do every day. ये रोज करने पर क्या होगा? You'll start getting results. तो रिजल्ट्स आने पर आप कोई चीज को, यू विल गिव, आपको व्हेन यू स्टार्ट, जब आपको रिजल्ट्स आना शुरू होगा, व्हाट विल यू डू? अरे ये कर रहा था इसलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं. वो क्या क्या कर रहे थे आप? एक्टिविटीज कर रहे थे, विच इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स, sharing solutions with clients, and sharing the business opportunity with people. So आपका स्केल भी बढ़ रहा है, आपका पर्सनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है. So what happens when you do these 3 things? Your business starts growing. And ये बिजनेस ग्रो करते करते आप क्या कर रहे हैं? आप रोज रेलेवेंट कंटेंट को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं एवरी डे. लिसन, व्यू कंटेंट फॉर मिनिमम 30 मिनट्स डेली, रेलेवेंट कंटेंट, राइट? नेक्स्ट इज रीड फॉर 30 मिनट्स डेली. रोज 30 मिनट पढ़ा करिए. कोई कोई भी अच्छा किताब लीजिएगा, एंड नवल रविकांत के किताब में ये टॉक्स अबाउट हाउ मेनी बुक्स ही रेड फ्रॉम द एज ऑफ 9. फ्रॉम द एज ऑफ 9, 9 साल की उम्र में ही मूव टू नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क में. एंड इज वेरी सून आफ्टर ही मूव टू नॉर्थ अमेरिका, his parents divorced, and his mother was working odd jobs full day, but so she used to tell him,
स्कूल जाने के बाद तुम जाके लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ो, तो बहुत कम उम्र में बुक पढ़ना शुरू कर दिया। हजारों बुक पढ़ लिया था बच्चे ने। तो आप जब उनकी किताब पढ़ते, यू रियलाइज, यू वंडर, आपको ताजुब नहीं होगा कि कितना मोतिया टपकते हो किताब से। इट्स बिकॉज ऑफ द thousands ऑफ बुक्स दैट यू रेड, राइट? ये वो बोलता है कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, यू कीप रीडिंग ऑल द टाइम, यू नो until you love to read. सो रीड करिए रोज, बिकॉज वो रीड करने में क्या होगा, करने के वक्त रीड करते करते यू विल डेवलप, यू नो बिलीव बढ़ता जाएगा। एंड एज यू रीड, जो नॉलेज आप पढ़ते हैं कि पिकअप करते हैं बुक्स के, आप अपने ओन क्रिएटिव में उसको ये पहले 3 स्टेप्स में अमल कर लेते हैं, राइट? एंड देन नेक्स्ट इज अटेंड ऑल मीटिंग्स। सी, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन गाइस। इफ तो कुछ लोग बोलते हैं अरे जूम मीटिंग में मजा नहीं आता है, मेरे को ये मीटिंग में मजा नहीं आता है, वही बात बोला जाता है। अरे भैया, अगर आपको मीटिंग में वही बात बोला जाता है, इतनी स्ट्रांगली फील करते हैं, तो आप लीडर बन जाओ ना। मुझे बता दीजिए, मुझे मुझे आपसे अच्छी तरह से बात कर सकते हो शंकर जी, प्लीज मुझे टाइम दीजिए, मैं मीटिंग को हिला दूंगा। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, right? So attend all meetings, because at the end of the day, if you get into the me and I mean we were insane in attending meetings. Several meetings made no sense to us at all, but हम लोग regularly meetings attend किए, and a stage came because we attended meetings regularly. हमारे टीम में लोग attend, everybody made these meetings a priority. We had thousands of people attending meetings. एंड हम लोग जब वैल्यू जजमेंट पास करना शुरू कर दिया ऑन द क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर और अ मीटिंग, हमारे नंबर्स जब वो आना शुरू हो गए। सो रिमेंबर, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यू डोंट हैव टू जज। दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर डिलीवरिंग अ कॉमन विजन। एंड हम लोग को काम क्या है, जब लोग मीटिंग्स में बात करते हैं, वी अपलिफ्ट एंड सेलिब्रेट एवरी पर्सन हु स्पीक्स। तो क्या होगा कि दिस विल लुक लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल विल कम इन एंड फील एक्सेप्टेड। एंड कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के सफल बनने के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एवरीवन फील्स दैट दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट, एंड दे कैन बिलीव, एंड दे कैन पार्टेक एंड ग्रो। तो ये एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है। दैट्स व्हाई यू अटेंड ऑल मीटिंग्स, इन पर्सन सेशन, जूम सेशन, कम्युनिटी सेशन। कुछ दिनों में ओपन मीटिंग शुरू हो जाएंगे, बीबीएस शुरू हो जाएंगे, and large scale meetings will get started, and there will be people who will be able to promote these meetings effectively with their team, get people on board and grow their communities and such meetings. Seventh step, most important, be teachable all the time. The finest example of that is Dr. Ram. आज के दिन में भी, if you go to his house, you will watch that he is sitting in the meeting with a pen and a book. Extremely teachable always. That's why he is a library of content, at least as far as wellness is concerned. And in respect of life, also in respect of his fortitude, his ability to handle situations. I mean, टीचेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल बन के रहिए हमेशा। बी अकाउंटेबल, जुबान का पक्का रहिए, पैसों के मामले में एकदम क्लियर रहिए। यू नो the last step is basically being in communication with your upline and downline team daily. And actually, engagement is everything, guys. And aapko, we'll have to take steps to make sure that we are engaged with our upline team and the downline team is engaged with us. But guess what? Hota kya hai ki it's always works that I have found, मेरे personal experience में, the more I engage with my upline, the more my team engages with me, right? ये एक people dynamic है, this is something which works always in this business. So you remain in communication with your upline and downline team daily. And as far as your team concerned, act more, judge less. With customers, act more, be proactive more, judge less. अगर आपको कस्टमर को पता चलता है that you're evaluating but not judging, the customer will come closer to you. Even in the team, if people know that you're evaluating with a view to help, they'll get closer to you. But the moment they know that you're passing value judgments, they'll run away from you. Personal experience. Quickly on the 3 powers, the power of submission, team में आप, be always in submission with your with the team and the upline. Most of you जो ये कॉल में है, you always been testimonials of using the 3 powers already. तो मेरे को आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है।
But this second one is extremely important in today's circumstances, guys. Use the power of the spoken word. Zaban mein, there should be only positive coming out all the time. Use the power of the spoken word. Be united with the family and the team, you know. And again, more important than how you talk or profess, how you act is much more important, you know. जैसे कि कोई भी situation, whether it is family or whether it is a team, you know, how are your actions, you know. Basically, submission and unity ज्यादातर तक एक्शन से बयान ज्यादा होता है rather than what you just merely profess with your mouth. It's not enough to say you're united. Your body language, your actions, your words, the way you speak, how you engage with the team, how do you connect with people. Uh, you know, this is very, very powerful, guys. As we look back, you know, Sangeeta and I, we are extremely grateful because जब ये teaching आया था हमारे पास, you know, we took this teaching very, very seriously. And we remained with this teaching through our ups and downs in the business, right? And the next is the six cardinal rules. Don't do anything for the first time without checking upline. Number two, never pass negative or downline. यहाँ पर I would like to clarify. See, if I had a choice between bluffing my downline and telling him the truth, I always told the truth. कुछ लोगों के लिए लगता होगा कि I was passing negative, you know, but I always put my team's interest first. If I thought something did not make sense, even if it sounded like negative, I had shared it. Did it help us? 100%. Because everybody, without a doubt, can say one thing today that they can rely on us. And I would encourage you to do the same thing, you know. If something is not right, be bold enough to say it because in the long term, people will respect you for it. Does that mean you should give negative under all circumstances? No. But most of the time, you know, अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, your aura will be of positivity. And when you pass the exceptional time when you share something negative, लोगों को context समझ में आ जाएगा. So पोपट का माफिक नहीं फॉलो करने का है कोई भी कार्डिनल रूल को. Use your brains. And if you have to choose between your team and the business, always keep your people first. And if anything is going to hurt your team's interests, always say that first. The people will respect for you for it and they'll stay with you. And you know, kabhi, you know, something's wrong happens, some wrong promotions come up or something right doesn't happen. Arun bhai, can you elaborate on this? Can you help me elaborate on this a little bit? Yeah. Which point, Shankar bhai? Everything. आपका म्यूट हो गया. Never part negative downline or crossline. Yeah. See, बहुत कॉमन सेंस है एक्चुअली ये टॉपिक में. कोई भी चीज अगर ऐसी है जो शायद आपके साथ अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, इट कैन बी इन एनी एरिया, यू नो. समझो आपके पास प्रोडक्ट आया बट देयर इज सम प्रॉब्लम इन पैकेजिंग और इन सम प्रोडक्ट पैकेजिंग, गलत पैकेज आ गया. आप बिजनेस दिखाने गए बट आपको कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ, प्रॉस्पेक्ट नहीं मिला आपको, आपका वक्त और पैसा दोनों गया. व्हाई शुड आई शेयर दैट विद माय टीम? क्योंकि वो लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अगर अरुण भाई के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा. अगर अरुण भाई अहमदाबाद जाके आए और उनको कैंडिडेट नहीं मिला, फिर तो मेरे को भी अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए, राइट? सो कौन सी Take another example, you know, because what I want to tell the team is that there are several things which happened in the last 10 years, you know, you know, where we had to tell the truth to the team. I want you to give one or two examples of that also. लाइक शंकर भाई को मैंने बहुत क्लोजली देखा इस मामले में कि ऑफ कोर्स शंकर भाई जो बात करते हैं उसमें मैं चीज ऐड करना चाहूंगा. व्हाट इज टॉकिंग इज his relationship with his front line mainly, Shankar bhai, right? Where the trust bond is there, you know. आप पब्लिकली सबके साथ, कोई आदमी समझे नहीं समझे, मैच्योर नहीं है, उनके साथ ये फॉलो मत करिए आप, राइट? बट इफ योर फ्रंट लाइन्स आर मैच्योर और पर्सन इन डेप्थ जिनके साथ आप काम कर रहे हो मैच्योर है, उनके साथ कोई चीज हाइड क्यों करेंगे? इट माइट हो सकता है कोई आपको आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ ले कई बार, यू नो. तो आप क्यों अगर वो ट्रस्ट वर्दी है, मैच्योर है, आप क्यों छुपाएंगे वो बात? यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि हाँ भाई, सब सी बिजनेस ऊपर गया नीचे गया, वो तो हर बिजनेस में होता है. समटाइम कुछ कई बार लोग सोचते हैं कि एमवे में
नीचे जाना मतलब दुनिया में ऐसा कहीं होता ही नहीं है। अंबानी का बिजनेस भी नीचे जाता है। पॉइंट इज नॉट कि बिजनेस नीचे गया, पॉइंट इज कि उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई डाउनलाइन, कि वॉल्यूम नीचे गया, एटीट्यूड नीचे नहीं गया है ना आपका। अगर एटीट्यूड नीचे गया है तो प्रॉब्लम है, फिर वॉल्यूम वापस नहीं आएगा। सो उस तरह की अगर कोई ऐसी बात जहां पे आप सी, समटाइम इट बिकम्स अ गुड एग्जांपल आल्सो, कि इसके बाद भी मेरे अपलाइन का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, राइट। हो सकता है वो ट्रिप में नहीं गए, नहीं गए तो नहीं गए, बट स्टिल इज इन द गेम। इंपॉर्टेंट क्या है, ही इज इन द गेम। वो बात आपको समझना चाहिए। तो आप व्हेन यू लिसन द होल थिंग, आप उसमें से उस चैप्टर को किस तरह लेते हैं आप, समझे। कई बार लोगों की कोशिश रहती है कि वो नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ वो तो अरुण भाई वो डायमंड ट्रिप में नहीं गए। करेक्ट, मैं डायमंड ट्रिप में नहीं गया भाई, बट मैं 10 बार गया भी इधर, राइट। पहले वो फॉलो कर लो ना, देन यू क्वालिफाई फॉर द डिस्कशन। सो टेक पॉजिटिवली। आई वाई शुड आई हाइड के मैं नहीं गया तो नहीं गया है, उसमें क्या है। हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर छठे लेग का 1,000 भी चला जाएगा तो आपका क्वालिफिकेशन चला जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि बिजनेस चला गया है, राइट। ये बात है, राइट शंकर। Basically क्या होता है कि what is your connect with your leader, you know हाँ within any organization. When an organization is organize a collection of people, actually the collection of people, that organization will go through ups and downs. So what makes the organization weather storm is a bond within that team of people. You know, I've seen worked in Reliance for a long time. Reliance has weathered several challenges, but one of the reasons why it's kept growing from time to time regularly, despite its setbacks, is your core leadership है उन लोगों में. They are extremely strongly bound together, and they work with passion 16 hours a day, 7 days a week. तो ये क्या होता है कि and that team, that core team, that core team, they follow all these 6 cardinal rules. That's a given. क्योंकि that creates the context for an organization of growth. So don't embarrass or de-edify your upline or downline. This is common sense. I mean, ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है in this kind of a leaders session. The fourth one is never mess with anyone's money. Never mess with anyone's ego. Never mess with anyone's spouse. These are 6 simple things that you do. It will keep your business pure. And always remember one thing: people before profit. That is the overall guiding principle. Now, the next one I want to discuss is, this book. So I'm going to quickly run through it and then call Sangeeta to talk to you guys. She's sitting in the corner there because they've got the air conditioned on very cold, and so she'll join. So it's about this book which I've read, completed reading. In fact, ये book का इतना सारा content है online, in interpreting this book. You know, uh, you know, I've read Tim Ferriss's book also, The 4 Hour Work Week. That's also a very interesting book. I read that more than 10 years ago. And Tim Ferriss has got a huge following on YouTube, and so, and Joe Rogan का जो, podcast है with Naval Ravikant, that is an all-time classic, which I would encourage all of you to listen to again and again. और ये किताब का इतना सारा कॉन्टेक्ट हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप सुन सकते हैं. तो पहली बात, ये किताब का कुछ नगेट्स मैंने पिकअप की है. तो पहली बात है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये बिजनेस में सही रीजंस के लिए, आर नॉट इन दिस बिजनेस फॉर मनी, यू आर इन दिस बिजनेस फॉर वेल्थ. आपको एक उदाहरण देता हूं मैं. सेवरल इयर्स अगो हम लोग सब एमरल्ड गए थे बिजनेस में, एंड आई वेंट एमरल्ड फर्स्ट, देन डॉक्टर राम वेंट, देन एनपी वेंट, देन अरुण मिश्रा वेंट. देन व्हेन अरुण जी व्हेन ही वेंट एमरल्ड, तो हम सब एमरल्ड बड़े बड़े गाड़ियां खरीद रहे थे. मेरे को कंपनी से गाड़ी मिली तो हम लोग को खरीदना नहीं पड़ा. बट यू नो काफी एमरल्ड बड़े बड़े गाड़ी खरीद रहे थे. अरुण जी को बोला मेरे को भी लैंसर खरीदना है. तो मैंने उनको बोला कि भैया तुम लैंसर खरीद के तुम शोरूम से बाहर निकालोगे तो उसका 30% वैल्यू चला जाएगा. तो मैंने उनको बोला कुछ प्रॉपर्टी ले लो. तो ही स्टार्टेड यू नो बाइंग प्रॉपर्टी. और वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी के जब वैल्यू बढ़ने लगी उसको मजा आना शुरू हो गया, और प्रॉपर्टी आ गई. टुडे ही इज गॉट प्रॉपर्टी रनिंग इट सेवरल करोड़ रुपीज, राइट. अगर वो इनिशियल जो पैसे आ रहे थे उसके बिजनेस में काफी, अगर वो पैसे को उड़ा देते थे तो, राइट, दैट इज कैश फ्लो, दैट इज मनी. इफ यू डोंट
convert, how do you convert money into wealth? Through investments or by setting up businesses and making them grow. तो आपको पहला चीज याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा पीड़ा ये है कि लोग थोड़ा भी पैसे आने पर बड़े बड़े चीज खरीदना शुरू कर देते हैं, फार बियॉन्ड देयर मीन्स, राइट? सो बेसिकली यू सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस. हम लोगों ने वी नेवर बॉदर अबाउट स्टेटस, राइट? द फोकस ऑलवेज हैज बीन इन क्रिएटिंग वेल्थ. वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप. उसका मतलब है कि टुडे अरुण जी हैज सेवरल प्रॉपर्टीज एंड दैट दोस प्रॉपर्टीज क्रिएट कैश फ्लो फॉर. तो वो सोने के टाइम पे भी वो पैसे बनते हैं. सेम विद अरुण पाठक ऑल्सो एंड मेनी अदर लीडर्स इन आवर टीम. दे पुट अवे देयर मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू नो. एंड पैसों के साथ क्या करते हैं, हम टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं, राइट? सो टुमारो फॉर एग्जांपल इफ यू like if you got a lot of wealth, you can use cash flows from that wealth to fuel your lifestyle. But you're not touching your wealth. That wealth is keeping growing and it's earning for you while you sleep. ये बिजनेस में डायमंड अच्छी तरह से जाने का क्या फायदा है? That diamond organization is wealth for you, and that wealth is creating cash flow for you on a regular basis. एंड अगर आपका वेल्थ क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है, आप हमेशा सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करोगे. आप वही काम करोगे जिससे आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा. दूसरी चीज याद रखना है, आप सब प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है, आप टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हैं. और टाइम बेचकर पैसे कमाने में क्या होता है, आपकी टाइम की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ जाता है. मान लो आप टॉप लॉयर है और एक एक हियरिंग का आप 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर भी आप अपने टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हैं. और वो जब कमाई बढ़ रहा है, तो वो कमाई जब आ रहा है, वो कमाई को आप लाइफस्टाइल को फंड कर रहे हैं वो कमाई के साथ. दैट इज अ रॉन्ग वे टू क्रिएट वेल्थ. क्या करना है, यू आर नॉट, यू मस्ट, आपको इक्विटी पे फोकस करना है. एंड हाउ इज इक्विटी क्रिएटेड इन दिस बिजनेस? बाय हैविंग स्केल. विड्थ है, डेप्थ है आपके पास, बिजनेस बन रहा है आपका, तो आप स्केल क्रिएट कर रहे हैं, और वो स्केल जो बनता है उसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करते हैं. You will get rich by giving society what it wants, but does not yet know how to get at scale. मतलब आप अब रईस कब बनेंगे? जब आप समाज को वो चीज देंगे जो उनको हासिल करना नहीं आता है, और आप उनको हासिल करवाते हैं, और स्तर से करवाते हैं, अच्छी स्केल में करवाते हैं. और देखिए, ये काम करने के टाइम में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जब आप व्हेन यू आर बिकमिंग, यू नो, व्हेन यू आर ग्रोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ग्रो करने के लिए, आपको एक गेम खेलना होगा रेगुलरली. एंड वो गेम को आप आइटरेट करते जाएंगे. आइटरेट का मतलब है कि आप बार बार वो गेम को खेल करते जाएंगे. आप जैसे कि आप 4 बेसिक कर रहे हैं, उसको बार बार कर रहे हैं, और करने का टाइम आप वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं. और इफेक्टिव हो रहा है तो और करने का कोशिश करेंगे, और इफेक्टिव होते होते आपका ग्रो करेगा बिजनेस, और ग्रो करने पर कंपाउंडिंग आएगा, और कंपाउंडिंग से आप धनी बन जाएंगे. और नेक्स्ट बात यह है कि टीम में जब लोग को लेके आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी रहने दो या टीम मेंबर्स भी रहने दो, चूज पार्टनर्स ओनली विथ हाई इंटेलिजेंस, एनर्जी, एंड अबव ऑल, यू नो हाई इंटेल एंड अबव ऑल इंटेग्रिटी. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर टीम इज कंसर्न्ड. डोंट पार्टनर विथ सिनिक्स एंड पेसिमिस्ट. देयर बिलीफ्स आर सेल्फ फुलफिलिंग. उसका मतलब है कि नेगेटिव लोग के साथ पार्टनर मत करिए, राइट? उन लोग की जो विचारधाराएं हैं वो खुद अमल हो जाते हैं. उनकी विचारधारा, उन लोग को मालूम नहीं कि उनका विचारधारा ही वो कारण है, राइट? 7th स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आपको बेचना आना चाहिए और आपको बिल्ड करना आना चाहिए. बिल्ड कैसे करते हैं हमारे बिजनेस में? विद द 4 बेसिक्स. बिल्ड को कैसे इफेक्टिवली करते हैं? विद द 9 कोर स्टेप्स, राइट? अगर आपको बेचना भी आता है और बिल्ड करना भी आता है, फिर आपको बड़ी स्केल बिजनेस बनाने में कोई नहीं रोक सकता है. नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड से इज, आपको स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करना है. नाउ हाउ डू यू क्रिएट स्पेसिफिक नॉलेज? स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है बिजनेस में? दैट हाउ डू यू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर योर कस्टमर्स, एंड सेकंड, हाउ डू यू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट टुगेदर. एंड अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करते हैं हमेशा टीम में, people know that you are predictable and you're always available for them,
you will never go wrong in this business, guys. And अगर आपको सीखना है इस बारे में, you're always welcome to contact Sangeeta and I. We are always available for you guys, you know. And तो आप क्रिएट स्पेसिफिक नॉलेज बनाएंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेंगे, और लोगों को सिखाते जाएंगे, आप लेवरेज क्रिएट करेंगे। और स्पेसिफिक नॉलेज को हासिल करने का नंबर वन तरीका है कि आपकी जो अंदर क्यूरियोसिटी है ना, उसको आपको बढ़ाना है। आपकी जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने में। एंड डोंट फॉलो व्हाट इज हॉट राइट नाउ। Create, be a content creator and a good content consumer. Don't consume everything on social media. Consume the right content which is relevant to your future. आपका नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, मनी डजंट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। नवल रविकांत का एक बढ़िया कोट है, मनी डजंट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स बट मनी सॉल्व्स ऑल मनी प्रॉब्लम्स। अग्री करते हैं आप? मनी डजंट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स बट मनी सॉल्व्स ऑल मनी मनी। प्रॉब्लम। So, and something as trivial as money, you should get it out of the way, create wealth, and then live life on your terms, guys. Because एक stage के बाद it really won't matter how much money you make. But after that, you can live life on your own terms and then set up some new dreams and goals and go and achieve that. Maybe your idea will be to create an organization with 1,000 diamonds. Why not? Create a system through which you can create 1,000 diamonds in your team. And this business is going there, guys. और देखिए, वन चीज याद रखना है कि स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करने के लिए यू कैन ओनली डू दैट एज एन अप्रेंटिस। इट्स लाइक बीइंग अ डॉक्टर। डॉक्टर्स अग्री करेंगे, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यू कैन पिक अप यू नो थ्रू बुक्स or through medical school. But the largest learnings as a doctor you'll have is when you are actually being an apprentice or in an hospital where you're actually seeing patients. So building this business is also like that. तो स्पेसिफिक नॉलेज आप तब गेन करेंगे when you do a substantial amount of the four basics under proper guidance. And the last thing he says, one thing which I loved in this book, is become the best at what you do. मेरे को याद है कि I got several opportunities even during my professional career to excel, and I became the best at what I was doing in my team, in my organization. Arun bhai knows. ये business में भी जब आया, it's the same drive which was there to become the best at what you do. एंड आई रियली विश दैट यहाँ पर कुछ लोग होंगे हमारे ये कॉल में जिनको लगता होगा कि आई कैन एक्सेल शंकर एंड संगीता। वी वुड सेलिब्रेट दैट। इट्स नॉट लिमिटिंग, यू नो रिफाइन व्हाट यू डू, अंटिल यू रियली, ये आपको लगेगा कि आई एम द बेस्ट एट व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद क्या होगा कि व्हेन यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू डू, एवरी अपॉर्चुनिटी विल सीक यू आउट। मतलब जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, प्रोस्पेक्ट को इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, राइट? तो वो लोग आपको सीक आउट करेंगे व्हेन यू बिकम द बेस्ट एट व्हाट यू डू। लक विल बिकम योर डेस्टिनी। नवल रविकांत के किताब में देयर इज अ ह्यूज चैप्टर ऑन लक। लक विल बिकम योर डेस्टिनी व्हेन यू बिकम द बेस्ट एट व्हाट यू डू। So this is all I wanted to say tonight. I'll call Sangeeta to speak to you guys for a little while. She's up to a lot of things these days, and as I said, we've just helped her dad to come back from hospital today, and he's getting better. So come. नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। शंकर कोट पहन नहीं पा रहे हैं और मैं बिना शॉल के रह नहीं पा रही। हालांकि बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन इस कमरे में फिलहाल इसीलिए उस कोने में बैठी हुई थी, सो दैट हमको हवा न लगे करके। शंकर, लाइट इज टू मच ना। ओके। No, Arun bhai approved of the lights. That's why I kept it that way. ओके, ठीक है, ठीक है। मैं just नहीं, आप जो कंफर्टेबल रखिए, डोंट वरी। आने वो मेरी आंख पे लग रहा हाँ, है। इसके लिए प्लीज कम कर। 2 सेकंड, 2 सेकंड, कोई बात नहीं। So nice to see everybody. Can I put this, Shankar? Can I see everybody? गैलरी व्यू।
अरे वाह, हाउ नाइस टू सी एवरीबॉडी। रियली बहुत समय बाद ऐसा वक्त ऐसा समय आ रहा है कि जो हम सबसे एक साथ बात करें, फील सो गुड। और ज्यादातर लोग हमारे पुराने पहचान के हैं, है ना? सो सी कमिंग टू दिस बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप सब लोग नहीं जानते। जितने चेहरे मैं यहाँ देख रही हूँ, ऐसा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी एवरीबॉडी। ओके, वेरी नाइस। तो जितने लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ ना, आप सब तो हमारे पुराने दोस्त हैं। कोविड की वजह से सामने मिलना नहीं हुआ, उसके बाद मीटिंग्स बंद हो गई, उसकी वजह से सामने मिलना नहीं हुआ। लेकिन वी लुक फॉरवर्ड टू अ टाइम जब ये इस तरह की मीटिंग्स वापस शुरू होने वाले हैं। दैट्स ऑल। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं तो अच्छा लग रहा है सुनने में। एंड जब भी अपने को कुछ टीम बनाना है तो वो सारी चीजें जो शंकर जी ने इस समय कही हैं, वो सारी, दे आर ऑल जस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग एनी टीम एनीवेयर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बनानी है जिसमें कि सब लोग एक ढंग से सोचे, एक तरीके से सोचे, एक तरीके से, मतलब एक ही तरीके का उनका थॉट हो, दिशा हो, जब वो दिशा होती है ना, तभी दशा बदलती है। और ही स्पोक अबाउट कॉन्फिडेंस। पिछले कुछ सालों में जो हमने कई सारे चेंजेस देखे, नॉट ओनली इन द बिजनेस, दुनिया में चेंजेस देखे, तो नेचुरली उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे भी पड़ा है। और उसमें कई लोग कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि अच्छा ठीक है, इस अगर ये मतलब थोड़ा जो कॉन्फिडेंस लेवल कम ज्यादा होना, जो भी होना। बट एक और बात आपको बताऊं कि एक साइकिल होता है हर चीज का। इसको हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप चढ़ रहे हो, जब आप चढ़ रहे हो, एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के बाद अगर आपको चलते जाना है, तो आप, नेचुरल दिशा यही है कि इट कम्स डाउन। एवरीथिंग दैट गोज अप कम्स डाउन। फिर उसके बाद क्या है, अगर चलते जाना है, देन द नेक्स्ट पहाड़ इज देयर। सो लाइफ का साइकिल ही ऐसा है कि हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। चेंज इज इनएविटेबल। एंड चेंज के साथ साथ हमें अपने सोचने, अपने तरीकों को, इनको भी हमें चेंज के साथ साथ चेंज करना होता है, एट द सेम टाइम कीपिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स द सेम, वो कभी नहीं बदलते। So, this business, all of you know everything. We are looking at the basics, which are the same, like talking to people about what we talk is the same. It's either the products or the business, anyway, whichever way it works. And I mean, I don't know कि आप लोगों से मैं क्या बोलूं। To me, the feeling is that you all know everything. हर चीज जो हमने सीखी है और इतने सालों से हम सब ने की है, वो हमारे जहन में है, वो हमारे खून में है। Unless there are new people, a lot of new people here today. Otherwise, for us who've been in the business for a lot of time, ये सारी चीजें हमारे लिए, it has become like बाएं हाथ का खेल जैसे हम कहते हैं ना, वो सारी चीजें हमने उतना एकदम हम लोग पी चुके हैं। तो द सेम प्रिंसिपल्स एंड द सेम ग्रोथ प्रिंसिपल्स जो कि हर बिजनेस के लिए सेम है, उनको जब हमारे टीम में नए लोग आएंगे तो उनको हमें ट्रेन करना है, उनके साथ काम करना है, with renewed enthusiasm, renewed growth, and success is yours. Okay, I'll quickly summarize again. I'll go back to the presentation slide deck, and quickly go back to the, what do you call it? Yeah. So just in summary, अगर आपको वापस जाकर, what should you do next? Next is sit down and rewrite your dreams. Guys, it's magical. अगर आप बैठकर अपना गोल्स वापस लिखेंगे एंड एंगेज करके लिखो, राइट? ऐसे ड्रीम्स लिखो जो हासिल करना बिल्कुल जरूरी है, वो लिख दीजिएगा। राइट दीज ड्रीम्स, पहला स्टेप में ही अगर आप ढंग से करेंगे इस स्टेप को,
बाकी steps will flow automatically. The moment you have one dream that you believe you should achieve in the future, your business is changed. I guarantee you guys. Sit down and rewrite your dream. उसमें एक चीज ऐड करूं, जब आप ड्रीम लिखेंगे ना, तो प्लीज डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस फॉर द फ्यूचर। आज के दिन में आप हैप्पी रहोगे तो वो ड्रीम हासिल करना ज्यादा आसान है। That's right. क्योंकि क्या होता है कि हमारे बिजनेस में पीपल सी यू। अरुण भाई जब मेरे पास आए थे बिजनेस देखने के लिए, मैं 3% में भी नहीं था जब उसको प्लान दिखाया। बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ था इंडिया में, बट ही सॉ मी विद अ ड्रीम. ही सॉ मी विद समबडी हु वाज वेरी हैप्पी. Am I right, Arun bhai? Yes, and I saw you very committed, very involved in your job, very passionate. ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। That's right. तो आपको लोग तब वैसे ही फॉलो करेंगे ना. It's not on the basis of what pin level you are. And the people will follow you on the basis of your passion, your dream. You know. And ये ड्रीम अगर स्ट्रांग है गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर ये स्टेप आपने हासिल कर लिया ना, गो बैक एंड रीराइट योर ड्रीम्स टुडे गाइस. And if you really rewrite your dreams and send it to me, I will send you a salute by reply and call you and talk to you. Give us an opportunity to engage in your dreams and goals, guys. We will deliver together. So dreams में work on your dream. Start working on your skills and scale again. Get back to the 4 basics and 9 core steps. Work on your belief and confidence. Feed your belief and confidence with action. Belief and confidence को बढ़ाने का number one step is the first 3 of the 9 core steps. First 3 of the 9 core steps का आप करेंगे, you do the first 3 of the 9 core steps. That is action. And how do you make these actions stronger? With the next 3 of the 9 core steps, the next 6 of the 9 core steps. इसको next 6 of the 9 core steps को आप strong करेंगे, ये तीनों steps जो है 9 core steps का use, sale and plan वो effective होते जाएंगे. And then fortify your 9 core steps with the 3 powers and the 6 cardinal. So simple. And मैं recommend करूंगा कि नवल रविकांत के जो किताब है, I would recommend all of you to read it. Not all parts of that book are relevant to our business, but several parts are. And वो किताब का ऑडियो बुक यूट्यूब में हिंदी में भी अवेलेबल है, एंड उसके समरीज भी अवेलेबल है. And make book reading a passion. I would like to mention Chetan and Tripti running their book reading club every day. Very very proud of you, Chetan and Tripti. आप लोग रोज कर रहे हैं. That's magical, guys. If you can get into the habit of reading books regularly, nothing like it. So with that, I'm pretty much done for the evening. I hope you enjoyed the session, and now I'll quickly like to see reactions from everyone. You can just raise your hands. We'll spend maybe 10 minutes in getting reactions from people. Yes, go ahead, Dr. Ram. Unmute करके बात करो one by one. No problem. अरुण भाई, सब very nice, and I feel everybody to increase the belief first is the action part of it. And remember, only 3 words you have to do what you were doing before. One is call, talk, and connect. Either you call somebody, or you talk to somebody, or connect in social media. That will be the only thing by which your action will increase, and automatically your belief will increase. And even book reading, as Shankar said, and attending functions are very important, because in medicine we have been taught that these 5 senses बोलते हैं ना, इंद्रिया 5 senses. 5 senses को cover करने के लिए there are 11 million receptors. 11 million ब्रेन में, और 11 million में जो आंख और कान है ना, उसके लिए 10 million. बाकी नोज, माउथ और टच, इसके लिए खाली 1 million. So imagine the importance of reading as well as hearing and attending function. So that is why these 3 are very important, because the receptors are maximum 10 million out of 11 million. So remember, so just these 3, always read books, listen to whatever your upline says, and attend all the functions, and do this action, only 3 words: call, meet, and connect. Thank you very much, Shankar. Yes. NP, please go ahead. अच्छा अरुण भाई अनम्यूट करिए एनपी को.
And Yeah, now you can everybody, unmute yourself. हाँ, थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू कार्तिक। शंकर जी, आपको कितना धन्यवाद दें, डोंट हैव एनी वर्ड्स से। लेकिन ये दिनों का इंतजार सालों से है, क्योंकि आज जो हम लोग हैं, ठीक है, एम्बे एक प्रिंसिपल कंपनी है, लेकिन उस प्रिंसिपल कंपनी में जान डाल के जो हमको बनाया है वो ब्रिक वर्ल्डवाइड ने बनाया है, एसोसिएशन ने बनाया, अपलाइन टीम्स ने बनाया, और डाउनलाइन टीम्स का लव और अफेक्शन था। आज आपने वो पूरा ब्रिक वर्ल्डवाइड अगेन हमारे आंख के सामने ला दिया, और मैं जानता हूँ कि यही सीक्रेट है सक्सेस का। ओनली थिंग जैसे आई वांट टू आस्क यू शंकर जी, कि जैसे हम लोग ओपन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग करते थे, और होम टू होम तो ऑफ कोर्स चालू ही है, मैं चालू हो रखा हूँ और चालू रहेगा, लेकिन क्या हम वो ओपन मीटिंग फिजिकली चालू कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, या कब कर सकते हैं? absolutely. We should focus on a little bit of scale first through home meetings NP. अपना होम मीटिंग्स में जो स्केल के नंबर्स, थोड़ा 10-15 लोग अगर होम मीटिंग्स में आना शुरू कर दें। एक्चुअली डॉक्टर राम का घर में होम मीटिंग्स जब अनमैनेजेबल हो गए क्राउड की वजह से, फिर भी शिफ्टेड टू वानी। जब वानी अनमैनेजेबल हो गया, वी शिफ्टेड टू केलकर। लेकिन केलकर डिडंट कम व्हेन डॉक्टर राम्स हाउस वाज एम्प्टी। डॉक्टर राम्स हाउस वाज पैक्ड। सो द मैजिक, कुमार जी जो बोलते हैं, इज इन पीपल्स होम्स। सो यू शुड बी एबल टू क्रिएट दैट मैजिकल एटमोस्फियर इन आवर होम। एंड अगर हमारी टीम में दैट मैजिकल एटमोस्फियर विद द एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल अगर नहीं बन पा रहा है, एज लीडर्स इट्स आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दोज पीपल ऑन बोर्ड। हम चाह रहे हैं कि टीम में सभी लोग स्केल बढ़ाए, लेकिन टीम को लगेगा कि अरे ये स्केल क्यों नहीं बढ़ा रहे पहला। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर पर्सनल स्केल। यस, जो इनिशिएटिव आपने इनिशिएट किया है टू स्टार्ट ओपन मीटिंग्स एट द थाना ऑफिस, दैट इज ऑलरेडी इन मोशन एनपी। Amway is acting on your request, and that will happen very soon. We will get access to their office to conduct weekly meetings, and that is all your initiative NP. It will happen absolutely. That is one of the area where our Kumar Shankar team should come and increase the number and create the momentum. वो एक अच्छा जगह मिल गया है। दूसरा, हम वहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट फोर्टनाइटली हम लोग 15 दिनों में एक बार, स्पेशली बॉम्बे टीम के लिए लाभ होगा, थोड़ा पेरीफेरी के लोगों होगा, बाहर के लोगों नहीं हो पाएगा, सॉरी, कि वहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा हम रिटेल बेस्ड प्रेजेंटेशन प्लस उसको, जो हमने कम्युनिटी बिल्डिंग के तौर पे कभी यूज किया था, उसको बंद नहीं कर रहे तुरंत, एकदम इन्हीं झड़क से वो शुरू रखेंगे। तो हम लोग करते हैं अभी मॉर्निंग में 6:30, ऑल्टरनेट डे भी हम जूम पे आ गए हैं, मॉर्निंग 6:30। टुमारो मॉर्निंग अगेन वी हैव दिस, सो आई विल पुट द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। लास्ट कुछ हुए उसके बाद मैं कल का डालता हूँ। तो ये एक मेरा कहने तात्पर्य था शंकर जी, कि कहीं ग्रुप में मिले, बड़ी संख्या में मिले, जहाँ पे अपलाइन भी हो। समझो मैं हूँ तो मेरे साथ मेरे अपलाइन है जो मुझे आइडेंटिफाई करेंगे, जो मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे मेरे डाउनलाइन के सामने। तो एक टीम बने, थोड़ा मजा आएगा, ऐसा मेरा अपना संदेश था। बाकी इतना तो सच है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज आंसर, एंड व्हाट यू नरेटेड इज एब्सोल्यूट टचिंग, really with the folding, and I'm thanking you. Thank you for putting things together. Thank you. Karthik, go ahead. Thank you, Shankar ji, for organizing this program, this session. बहुत फायदा हो गया. Lot of revisiting basics, and I loved the slide of 9 core steps. और आपने बात किया तभी मैंने वो अल्मैनक वाला बुक ऑर्डर कर दिया अमेजोन में से, आ जाएगा घर पे. तो यू इंट्रोड्यूस मी टू जॉन मैक्सवेल बुक्स. तो जॉन मैक्सवेल की लीडरशिप बुक्स है मेरे ऊपर बहुत. आई हैव लर्नड अ लॉट. वन स्टेटमेंट दैट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट बुक इज लीडरशिप हैज टू बी अर्नड एवरी डे. बोलते यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर एनी अचीवमेंट, यू हैव टू अर्न लीडरशिप एवरी डे. इसीलिए कोर्स 9 कोर स्टेप्स हैव टू बी डन एवरी डे. आपने ये अच्छा याद कराया, डू इट एवरी डे एंड डू इट एवरी टाइम. अगर वो लोग याद रखेंगे हम लोग सब और उतना ही करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. And you should have fierce commitment to doing the 9 core steps regularly, guys. Huh? Yes, correct. I'm telling you. And people like, Dr. Ram, Dr. Girish, Dr. NP, Arun Mishra, Karthik, Chetan Shukla, Chetan Bira, all you guys are fiercely committed. आपने past में you've done it several times. I mean, at least we don't have to look for evidence, So, आप लोग के अंदर, you're a mountain of talent, guys. I'm extremely proud of all of you. And you heard this from Kumar's
voice itself several times. Many of your heroes, Arjun Pragna, Manoj and Anuradha, you guys are absolute heroes. Manoj and Anuradha grew in this business amidst chaotic professional life. And आज के दिन में is going through ऐसे एक दौर से वो गुजर रहे हैं आज, and but I know the time when he went platinum, founders platinum and beyond, he was harassed at his workplace. But he grew like crazy at that point of time because of his attitude and his वो bulldog जैसा एक hold. So, and same Arun and Pragna, fantastic guys. You guys are absolutely wonderful. Arun bhai, go ahead. थैंक यू शंकर भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया, मजेदार सेशन रहा। मैं 2-5 मिनट लूंगा शंकर भाई। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे यार 4 बेसिक ही बताया शंकर भाई ने, या 9 को स्टेप ही बताया, बहुत स्पेशल मीटिंग बोल रहे थे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे पहुंचे हो 4 बेसिक 9 कोर्स से ही पहुंचे थे। अगर आपको लगता है बस यही वापस बताया, सवाल ये नहीं कि आप जानते थे 4 बेसिक और 9 को स्टेप, सवाल ये है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 9 को स्टेप इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, और 9 को स्टेप में जो कस्टमर क्रिएशन और शो द प्लान वाला टॉपिक आता है विच इज कनेक्टेड विथ 4 बेसिक्स। लोगों को कई बार लगता है कि बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा है। मुझे भी कभी ख्याल आता है ऐसा, शंकर भाई के साथ ये सारी बातें मैं बहुत बार करता रहता हूँ, बट माई फाइंडिंग इज दैट बिजनेस तो वैसा ही है, बदलाव आया है, हमारे इंडिविजुअल में आया है। मैं आपको सेल्फ चेक के लिए कुछ बात पूछना चाहूंगा जो आप अपने आप को आंसर कीजिए। जब एसओसीडी प्रोग्राम था तो आप सीडी सुनते थे। इन एब्सेंस ऑफ एसओसीडी प्रोग्राम आपने पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितने टॉक सुने आप? जब बुक ऑफ मन प्रोग्राम था आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था, हर महीने किताब आपके घर पे आता था। पिछले 1 साल में आप लोगों ने कितने किताब पढ़े? राइट। ज्यादातर लोगों को जब मैं देखता हूं, जो लोगों की लैंग्वेज वीक है या जहां पे बिलीफ नहीं है, उनको मैं देखता हूं देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आप बहुत बिजी थे, घर जाके लोगों के घर में जाके प्लान दिखाते थे तो 2-3 घंटा 4 घंटा निकल जाता। अब वो जब नहीं कर रहे हो तो 4 घंटा कहाँ जा रहा है, पूछिए अपने आप को। अगर पॉलिटिकल वीडियो देख रहे हैं आप, कोई स्पोर्ट्स का वीडियो देख रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जाएगी जिसकी वो आपकी जरूरत ही नहीं है सफलता के लिए। शंकर भाई, पहली बार जब मैं प्लेटिनम गया तो व्हाट्सएप कहाँ पे था? महीने में 1 ही बार मैसेज आता था कि ये ऑफर है, बस ईमेल के द्वारा, दैट्स इट। आज तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट उसका नेगेटिव भी है। हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियो है, बहुत सारे रील है, बहुत सारे फेसबुक वीडियो, और हम उसी में डूब जाते हैं। आप अपने आप को पूछिए, शंकर भाई ने जो ड्रीम वाली बात बताई, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? हर रोज अपने डेली टाइम को वॉच कीजिए आप। मेरा ऐसा मानना है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, अगर आपका बिलीफ काम नहीं कर रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करने की जगह आप अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हैं फॉर श्योर, विदाउट नोइंग योर टाइम टेबल। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, गारंटेड कह सकता हूँ। सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। सफलता के लिए माल बेचना है, वो सब बराबर है, कॉल करना है, बात तो वही है, बट अनलेस यू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ शंकर भाई, मैं जब रिलायंस में था, आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय कंपनी बस, राइट। फिर मैंने अल्टो गाड़ी खरीदा प्लेटिनम जाने के बाद। अब रिलायंस में शेयरिंग बेसिस पे सब लोग एम्प्लॉय जाते थे नौकरी करने के लिए। एक गाड़ी में 4 इंजीनियर जाएंगे, एक हफ्ता एक इंजीनियर, दूसरा हफ्ता दूसरे की गाड़ी, तो पेट्रोल का शेयरिंग हो जाएगा, खर्चा 1/4 हो जाएगा। मैं भी उसी फ्लो में गया शुरुआत में। अब मैंने जाके अंदर कुमार भाई का सीडी बजाया, टैप रिकॉर्डर था उस जमाने में, बाकी 3 लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे 2-3 हफ्ते में ही समझ आ गई शंकर भाई के ये लोग मुझे सुनने नहीं देंगे। मैं तो कार में इसलिए गया, मुझे खुशी इस बात की थी कि आते वक्त और जाते वक्त मैं सीडी सुन पाऊंगा, क्योंकि घर जाने के बाद तो 4 बेसिक में हम बिजी हो जाएंगे, कॉल करेंगे, किसी के घर पे जाएंगे, तब जूम कॉल नहीं था ना, तो आने जाने में बहुत टाइम जाता था। एक दिन में 2 अपॉइंटमेंट करने में, आने जाने में रात के 11 बजेंगे, सीडी कब सुनूंगा? थोड़े टाइम में मुझे समझ में आ गया कि बाकी के इंजीनियर मुझे सुनने नहीं देंगे, मैं अकेला जाने लगा शंकर भाई। दैट मीन्स पेट्रोल खर्च मेरा 4 टाइम्स हो गया ना बाकी लोगों के मुकाबले, बट आई कुड प्रोटेक्ट माई ब्रेन। सो आई हैव टू पे, उसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी। यस, अगर बाकी लोगों का 500 रुपये का पेट्रोल होता था, मेरा 2000 का होता था, बट आई कुड प्रोटेक्ट माई ब्रेन एंड आई कुड सक्सीड।
सो आप भी अपने आप को पूछिए, आप ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कुछ नहीं कर रहे, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड। यूट्यूब में जाके ऐसी वीडियो देखते हैं, वो देखो या नहीं देखो, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वीडियो देख के क्या फायदा है? ऐसी बहुत सारा जनरल नॉलेज बहुत सारा आपके पास बढ़ गया है, बट फायदा क्या है? बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा तो क्या फायदा है, राइट? सो प्रोटेक्ट योर ब्रेन। जॉन क्रो यूएसए में एग्जीक्यूटिव डायमंड है, आप लोगों ने उनके बारे में सुना है, जिनको गोली लगी थी, ही गॉट पैरालाइज, राइट? स्टेज पे आने के पहले तैयार होने में 2 घंटे लगते थे उनको। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई थी शंकर भाई, इसे व्हेन यू कम टू द एसोसिएशन, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है, राइट? जब आप नया इंसान है, कोई भी नया एबीओ आया, मीटिंग में आएगा, फंक्शन में आएगा, किताब पढ़ेगा, मैजिक ऑफ थिंकिंग पढ़ेगा, उसको मजा आ जाएगा, यस आई कैन डू इट। बट जॉन करो ने एक और चीज बोला, यही सेल्फ इमेज आपके नीचे भी जा सकती है, इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग इन एसोसिएशन, बिकॉज इफ यू डू नॉट एक्ट, योर कैलेंडर इज एम्प्टी, आपकी सेल्फ इमेज नीचे चली जाएगी। और उस वक्त बिजनेस छोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि आपने समझ लिया कि बिजनेस तो अच्छा है, बट फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज आप एक्शन नहीं कर रहे हो। सो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस। इसलिए कुमार भाई बोलते हैं कि नॉलेज भी लो बट एक्शन भी करो, राइट? सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन में आपको यही बोलूंगा। दिवाली हमारे सामने है, आफ्टर 1 वीक लोग बहुत सारी शुभेच्छा एक दूसरे को भेजते रहते हैं। मैं बार बार मेरी टीम में तो बोलता हूँ शंकर भाई, अगर शुभेच्छा से ही मेरा जीवन बदल जाता तो मैं अंबानी समीर हो जाता, इतनी शुभेच्छा मुझे मिलती है, राइट? बट इट विल, आपकी अगली दिवाली तभी अच्छी होगी व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। ये सब बदलाव करेंगे, अगली दिवाली, उसके बाद वाली दिवाली और अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल फ्लरिश इन दिस बिजनेस। थैंक यू शंकर भाई, संगीता भाई, फॉर ग्रेट सेशन। Chetan Tripti, go ahead. अच्छा, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। चेतन, you can हाँ unmute Now I can. Thank you, Shankar ji, for this amazing session. And we feel we just got launched in the business again. Thank you for this elaborate talk that you put up. और आपने जो वेल्थ क्रिएशन का जो बात किया है ना शंकर जी, that was amazing. And in fact, आपने जो forward किया है, that is amazing. I've started reading that book and I went through the YouTube clip also you forwarded, Naval Ravikant ka. So Actually, thank you for putting in wonderful effort, Shankar ji. जो So रोगन the का whole या बहुत बड़ा पॉडकास्ट है along with Naval Ravikant. जो रोगन is one of the largest podcast creators, तो go ahead Karthik, no problem, sure. Joe Rogan का एक he's one of the top content creators on YouTube, one of the largest, and he did a session with Naval Ravikant. सुनिएगा आप उसको, definitely, Shankar. fantastic, and the book, Naval Ravikant, मैंने book खरीदा, like Karthik bought the book, I also bought the book on Amazon, and then realized that Naval has published it free of cost on his website. So he doesn't even want anybody to buy the book anymore. He wants people to pick up the knowledge, use it, and become wealthy. According to him, everyone can become wealthy. So it's a fantastic concept. Imagine a world in which everyone is wealthy. मजा आएगा। And thank you, Shankar ji, because I got the habit of reading Go books ahead. from you, Shankar Okay. ji. Always get inspired. Thank you so much. Awesome. तृप्ति कुछ बोलना है क्या? It was great, Shankarji. It is a summary of everything that we have learned from the beginning of the business. 9 core steps, 3 powers, cardinal rules, doing our 4 basics. That's what we are doing every day, talking to new people about building community or showing products. So thank you for revising it and putting it so simply and nicely. Thank you. Well, you've included both, try to make it as inclusive in terms of approach, But आपको ये चीज याद रखना है, you'll need both skill and scale to succeed. And you definitely need scale to create wealth. You cannot create wealth without scale. And हमारे business में scale का मतलब क्या है? Large amount of width, large amount of depth. Depth. That comes from an organization. And what is that organization bound with? Not just giving solutions to customers. बहुत shallow हो जाएगा. Because I know many Amway markets, when we've gone for ALSs, we met distributors who used to give solutions to customers with published books, If you have cold, give these products. If you got migraine, give these products. If you got cholesterol, give these products. याद है आप लोगों को किताब? We used to print copies of it and give it out to everybody. Yeah. Those businesses were extremely fragile because they were only based on retail, sale, transactional. But when you create a community like this, guys, I'm telling you how precious this is. Most of the people जो call में अभी बचे हैं,
हम लोग के लिए वी आर वर्ल्ड फॉर ईच अदर. आप अग्री करते हैं? Products can never bind us like this. It's much more than the product. It's character. It's the this is the asset. You know. So I really have this vision that आप जब आपकी organization grow करेगी, it will be full of people whom you adore, like we adore all of you on the screen. You know. So what a blessing, Chetan, you and Tripti, you guys have been in our lives. You know. And I Thank you, sir. honestly, the Thank word you. of my heart, you know. And anybody else wants to unmute and speak? Go ahead, guys. You know. Anybody else wants to speak? I can see Tarak on the screen. Tarak, would you like to say something? And no, Miss, in the sense, it was fantastic and without any formality. It was really good to have, again, this full team talking and listening to Arun Pathak and you, Sangeeta ji. So we need to, but I agree that, what is basically had been missing, there cannot be an excuse for this, but is that physical touch, that physical meeting of those every Sunday meeting. That was a big spark. We had to bring that back in some way or the other. That's as early as possible. Okay, the only thing that I always told also, one thing that pinches us, it's been a great decision for us to move to Rajkot for life, for the purpose of life. But the only thing that we really miss is that physical touch, and we wish to come there, regularly once the physical meetings start, wherever possible, as much as possible, because that's what it is. But And also, we are Tarak, you create the magic in Rajkot, I promise you. yes. So that's Rajkot needs Tarak and Krupa, big time, and the entire Saurashtra region. So we have been attending this meeting here. There has been a meeting every Friday, every alternate Friday actually. We have been going there, but and we are in. We have always been in. We have never gone out. The intensity may have been little up and down, but we are in and we are in for life. There is no question about it. So that is for sure. It was a great pleasure listening to you, Shankar ji. Always, guys, absolutely. Thank you so much. Always available for each one of you. Shambhu bhai. Shankar bhai and Arun bhai and everyone, thank you very much for this wonderful session. शंकर भाई, मैं इतना जरूर कहूँगा आपके बारे में कि आपके पास नॉलेज, पैशन सब कुछ है, मगर एक इंग्रेडिएंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आप इनोसेंट की तरह जो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हो, एंड दैट इज वेरी वेरी मच आफ्टर सो मेनी ईयर्स. आप हमेशा आज भी देखे कि आप इतने इनोसेंट होके इतना सारा नॉलेज हमको शेयर किया है. थैंक यू वेरी मच. मैं भी अभी आज देखो, जैसे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की अगर आप बात कर रहे थे ना, आज की तारीख में भी मैं जब बात ले रहा हूँ तो 5 मिनट 7 मिनट अपने आप को सेल्फ टॉक से पंप करता हूँ, और वो पूरा दिन बहुत काम लगता है. डे टू डे एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कोई भी हो, इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग. सो इनोसेंस एंड पावर ऑफ सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करता है. एंड अभी लगता है कि काफी ये मीटिंग के दरमियान ही काफी कंफ्यूजन वाइप आउट हो गए. 4 बेसिक 9 को स्टेप बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Jatin bhai, go ahead. Jatin Bela. सर, हमने आपको बहुत बार सुना है और हर बार सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें उसमें से मिलता ही मिलता है. बट आई रिमेम्बर के फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको सूरत की एक मीटिंग में सुना था, और उस मीटिंग में आपने बुक पढ़ने के बारे में बहुत बात कही थी, और उसके बाद पहले भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बट क्या पढ़ना वो पता नहीं था, तो कुछ भी पढ़ते रहते थे. लेकिन उसके बाद जो हमने बुक्स पढ़ी, सर मेरे हाथ में एक किताब है, वो बुक बर्क हेजिस की है, उसका नाम है पढ़े और अमीर बने. तो ये बुक में क्यों पढ़ना चाहिए उसके ऊपर एक बुक है. और सर मैंने एक बात समझी है कि समझ लीजिए मेरा पूरा लाइफ जो ड्राइव होता है, चाहे मेरी रिलीजियस बुक, अब हम हिंदू है तो रिलीजियस बुक हमने जो नहीं पढ़ी है, कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है, अगर रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी है फिर भी उसका पूरा जीवन वो रिलीजियस बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से ही ड्राइव होता है. मैंने ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ा, मैंने रूल बुक नहीं पढ़ा है फिर भी मेरा चलन कटेगा, या मैंने कोई क्राइम किया, मैं लॉ नहीं जानता हूँ, मैं लॉ का बूट नहीं पढ़ा है, फिर भी मुझे वो क्राइम का कुछ ना कुछ सजा मिलेगी. तो सर अगर कोई बुक हम पढ़ ले,
जैसे कि अभी आप रविकांत की बात कर रहे थे, कोई बुक हम पढ़ ले, समझ रहे, वो हमारी बुक हमारे जीवन को किस अद्भुत तरीके इन्फ्लुएंस करके ड्राइव कर सकता है, वो मुझे समझ में आ गया था। इसलिए इसलिए मैंने कभी बुक पढ़ना बंद नहीं किया सर इतने सालों में। और दूसरी बात जो आपने एक्शन की करी, ज्यादातर एक जनरल सेंस ये है, और हम भी कई बार मीटिंगों में बोले हैं कि इंफॉर्मेशन लेने से नॉलेज आता है, और नॉलेज आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से एक्शन जो डालते हैं उसमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन सर यहाँ पर आज एक बात जो क्लियर हुई, एक्शन जो डालते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा के भी क्या करोगे आप अगर एक्शन ही नहीं डाला तो। और एक्शन डालने से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, और रिजल्ट प्रोड्यूस होने से जो पैसे आते हैं, वो पैसे से बिलीव बढ़ता है सर। मुझे याद है मेरा पहला चेक आया था 135 रुपीज़ का। उसके पहले हमने 2-3-4 महीने काम किया था, हम नहीं पहुंच पाए थे 3% पर। लेकिन उस टाइम पे मैं शेयर बाजार में बहुत इन्वॉल्व था, और जब मेरा 135 रुपीज़ का पहला चेक आया तो मेरे बाकी के लोग मुझे बोलते थे कि तेरा पैसा आवे तब बोलना। और 135 रुपीज़ का चेक आया, मैंने उनको दिखाया, तो लोग मुझे कहने लगे, जोर जोर से हंसे सब लोग, बोले देखो जतिन भाई 135 रुपया कमाए। लेकिन मेरे के लिए वो बिलीफ बूस्टर था। मेरे को मालूम है कि नल खुल गया है, आज भले ड्रॉप आ रहे हैं, एक दिन बहुत बड़े पैमाने पे उसमें से एक झरने की तरह पैसा आएगा, और वो सर आया भी। तो एक्शन से ही बिलीफ बढ़ता है, क्योंकि उससे पैसा आता है। ओके, दैट्स ऑल सर। Awesome, Jatin. Great. Awesome. Anybody else wants to chip in? Guys, remember हम लोग साथ में hang out करते थे. Again, let's keep this engagement live. And as NP suggested, we start our physical meetings very soon, get engaged with each other. And we would like to include everyone in this call in our vision. And मेरा ये और vision है कि every one of you have sessions both in person and in Zoom and in your homes, which go to scale. If Zoom was ineffective, and one more thing is there, guys, once you become successful in this business and you are able to grow a philosophy around it, you can start creating content. And that content could be powerful in reaching out to thousands of people in a very, very, you can impact people. तो वो किताब पढ़ के मेरे को ये भी लगा कि here is a guy who became very successful in business and then shared his business philosophy with everyone. And then he shared it so openly, and he made that book available free for everyone. So you can access that book free of cost. मैंने PDF already float किया है WhatsApp group में. If you haven't got it, direct message me, I'll send you the book. It's available in PDF. You can also download the book free of cost from Naval Ravikant's website. And the first exercise I'd like all of you to go back when you go back today is sit down and rewrite your goals. It's magical, guys. And then the goals को ढंग से लिखे, rewrite your dreams and goals properly, ढंग से लिखे, see the action start flowing after that. And then we'll start doing wonderful things together. The company is all geared up. I had a long session with Amrita Estrani. And जो भी corrective steps जरूरी है हमको लगा है जो business में करना चाहिए, because particularly when you're providing solutions for people's health issues, we need a much broader product portfolio, both in the nutrition section and as well as the Ayurveda section. So working very strongly with the company in fortifying the product portfolio as well, removing some wrong products, putting in the right products in, वो सब कर रहे हैं. But who will benefit most is the people who have scale. कंपनी बहुत बड़ी काम करेगी, अगर आपके पास स्केल है बिजनेस में तो कंपनी कुछ भी इनिशिएटिव करेगी, फोड़ेगा आपका बिजनेस, इट विल एक्सप्लोड. अग्री करते हैं आप? यू नीड बेसिकली स्केल फॉर दैट टू हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट. सो but that is going to happen in the next 1 to 2 years. If you in the meantime grow your business, you will reap rich rewards, guys. And one last thing I want to say is अगले 5 साल में जो परिवर्तन होने वाला है वर्ल्ड में, every job that can get automated will get automated. If you are doing a kind of a task, or if your children are doing jobs that can get automated, it is your responsibility to give them an option. Agree करते हैं आप? You agree with me? Right? You create the security cordon. So that is something that we can do. And आप लोग सब capable है. So I think we are pretty much done for the evening. We've been there for almost 2 hours. Close. Chirag has to say something. Yeah, Chirag, go ahead.
थैंक यू शंकर भाई, आपने जो विजडम दिया पूरी मीटिंग में, इट्स ग्रेट। एंड मैं तो यही बोलूँगा, इट इज़ बैक टू बेसिक, 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल रूल्स। ब्रिटवल भाई की जितनी भी टॉक्स थे, वो सारे टॉक्स में ये हम बार बार सुनते ही थे। एंड आई रियली एंजॉयड दिस सेशन वेरी मच। स्पेशली दिवाली आ रही है, नेक्स्ट वीक दिवाली है, एंड दिवाली में ज़्यादातर गुज्जू फैमिली में गिफ्टिंग का बहुत प्रथा होती है। तो हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री, वो बेसिकली गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे सोर्स है। हम लोग पास्ट में भी करते थे। इनफैक्ट बहुत सारे कॉरपोरेट्स हमारे पास से गिफ्ट करने के लिए, उनके क्लाइंट को गिफ्ट करने के लिए प्रोडक्ट लेते थे। एंड हम लोग गेस्ट को भी एक्सेस एनर्जी ड्रिंक से उनको वेलकम करेंगे न्यू ईयर में। न्यू ईयर में भी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे खुद के प्रोडक्ट है, और इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और अगर न्यू ईयर में हमें एक्सेस एनर्जी ड्रिंक से स्वागत करना है, तो अभी ऑर्डर करना पड़ेगा। राइट, पूरे साल ऑर्डर मिलता रहेगा चिराग। गुड आइडिया। फाइन। तो यहाँ पर शंकर भाई, हम होप के मीटिंग हम यहाँ एंड करें, या किसी और को कुछ? नहीं, that's it. अगले अगले गुरुवार को चिराग, there's a दिवाली, so we do not have the session, right? Yes. आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। दिवाली की शुभकामना, नए साल की शुभकामना। नवंबर का शेड्यूल जल्दी पोस्ट करेंगे, बिकॉज कुमार भाई का लेवल का जो टीम मीटिंग है वो भी मोस्ट लाइकली 10th नवंबर को होने वाला है। सो नवंबर शेड्यूल विल पब्लिश सून, बट यस, ऑन 31st एंजॉय योर दिवाली। एंड आप शंकर भाई ने बोला, जैसे आपका ड्रीम लिखिए। आप जब भी पूजा करेंगे, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, लाभ पाचम के दिन, वहां पे अपने ड्रीम रखिए। आप भगवान को प्रार्थना करते वक्त माँ लक्ष्मी कृपा करें। जतिन बेला की एक बहुत अच्छी आदत है, वो मुहूर्त का दिन निकाल के अपनी टीम में प्रमोट बहुत करते हैं, और वो बोलते ही लोग ऑर्डर भी देते हैं। यू नो, राकेश आरती है हमारी टीम में, फिर उसको भी आदत है। इनफैक्ट वो तो मुहूर्त के जो ऑर्डर आता है ना, उस ऑर्डर को एक्सक्लूसिव पैक करके उसके साथ एक गिफ्ट जोड़ के उसको देने जाता है वो। और सब कस्टमर को नहीं बोलते हैं, उनके जो वैल्यूएबल कस्टमर है पूरे साल के, ऐसे 15-20 कस्टमर, इसे कि मैं फोन करूं और मुझे ना नहीं बोले, ऐसे कस्टमर को मैं दिवाली के दिन ऐसे गिफ्टिंग भी करता हूं। सो वी कैन डेवलप ऑल दिस सच गुड हैबिट। जैसे चिराग ने बोला, एक्सेस ड्रिंक पिलाइए। नए साल में लोग एक दूसरों के घर आते जाते, तो लोग जरूर पूछेंगे, अरे वाह मजेदार ड्रिंक है, तो बिजनेस तो मिलेगा आगे। बट यस, उसके पहले एक्सेस आज ऑर्डर कर देना, राइट? ओके, गॉड ब्लेस यू शंकर भाई, संगीता मैन, थैंक यू वेरी मच। Okay, guys, good night. Good night. Wonderful talking to you. Good night. मैं अनम्यूट करता हूँ, सो आप सब लोग यू कैन जस्ट से बाय टू ग्राउंड नाइट टू एवरीवन। यस, आप सब Thank you. Good night. Ground Thank you, night. sir. Thank you very much. Ground night. Thank you so much. Ground night. Ground night, sir. Ground night, Arun bhai. And happy Deepavali to everyone. Happy Diwali to all of you. Thank you, Happy sir. Diwali, everyone. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. So much, sir. Wonderful session. Happy Diwali. Very nice, sir. Very nice. Excellent. Very educative session, sir. Thank you, Patil, sir. Thank you, Shankar sir and Sangeeta ma'am. Sangeeta madam, Shankar sir. Thank you so much, sir. Good Thank night, you, Arun guys. sir. Thank you. Good night. Happy Good Diwali. night, Sangeeta. Thank you, Thank Shankar you, sir, Sangeeta ma'am. Thank you, Varun sir. sir. Ground night, Very sir. excellent. Okay, guys, I'm hanging up the call. Good night. Thank you. लोग होते Good night.